Welcome to the Future Tech Spotlight online learning platform. यहाँ पे हमने हाइव स्टेटमेंट से हाइव कमांड CLI जो है वो हमें मिला है. ठीक है. नाउ हाइव इज डेटा वेयर हाउस सिस्टम वेयर यू कैन एनालाइज डेटा, यू कैन परफॉर्म ऑल द OLTP functions, you can do data mining, and in a way you can get the visualization of the data. So that is what done by the Hive. Okay, so basically Hive is not database management system, but Hive is what it will always give you analysis part. Okay, so if you still want to create database, then that is possible through Hive. So here you can create database. The command is create database, let's say demo. Okay, so this is demo database we are creating. Before that, if you want to see how many databases are there, that is also you can see through show databases. Okay, so this is what the command you can create a database. Okay, with minimum parameter. Okay, then show databases will give you all the database which are created in the this Hive environment. Okay, so now whenever you are creating this database, or whenever you are executing any type of DDL statements, there is no MapReduce job, right? Here we don't have to we don't have to submit a job as a MapReduce job, because this is just a template you are creating for data insertion. So as and when you are having a physical data with you, okay, that time that MapReduce job will come in the picture. So we will see when this MapReduce will come in the picture, because we have seen that Hive is always there, where whatever the queries are there, it is submitted as a job, and that job is submitted to MapReduce framework. वो हमने देखा था, right? But वो MapReduce job कब picture में आएगा? As and when you will do some transformation, so some aggregation, okay, some type of job where you are transforming something in the database. Okay, so that time it will come in the picture. Okay, so that way you can use a show database command to see the list of commands. Now suppose you want to see table, number of tables in some particular database. Okay, so let's say I want to use tmscdr underscore mca table, and then I want to see the tables. Okay, so now the command is use tmscdr underscore mca. This will only work on this particular database now onwards. So all the queries, whatever the query you will fire, that will fire for this table database. Okay, so now we can see show tables. So these tables are under tmscdr underscore mca database. So I am not able to see your comment. So if you want to say something or any problem in this, just unmute yourself and tell me. Okay. Okay, so this is the basic commands you can use for the database creation. Now suppose you want to create database using some database properties like creator name and the database creation date. Okay, so that time you require to use this command. Okay, so here we are having this ready commands available. Okay, so this is my create database command. So that we can save our time. So create database name with DB property, creator is equal to Mira and date is equal to this date. Okay, so this will give the details about the database. Whenever you want to access details, then it will give you all the details, the creator detail and the date of the creation. Okay, so this is also you can give. Okay, database demo already exists. Okay, so this particular database I have already created, and that's why it is giving error. And for that you can use command create database if not exist, and then database name. So you will not get any error. Okay. Acha. Now suppose you want to see the details about the database, then describe database फॉर बेसिक यूजर नेम अगर आपको सिर्फ चाहिए, तो यूजर नेम के लिए आपको सिर्फ देखना है डिस्क्राइब डेटाबेस डेमो 2 एंड ऑल द command will end with semicolon. Okay, so here you can say this, where is this
database created demo2.db. It is created in the Hive warehouse. This is the default environment or default, you can say, directory where all the database files are stored. Okay. Because these are all DDL statement, so it will store in the warehouse. And if the data, physical data you are storing, then it will go to a data node. Okay. And it is also giving you the details about the user. कौन सा यूजर है, तो Cloudera is the user. Okay, currently we have Cloudera user. ठीक है. Now suppose you want to see more details about the table, then more details about the database, then extended command is there. Describe database extended demo2. Now this will give you details regarding the data of whatever the parameter you have given in the database while creating the database. Okay, so it will give you all the details about the database. Create. Now if I want to delete this database, then which command I can use? Yes, anyone? I want to delete this database. Yes, anyone? If I want to delete this database, drop command. Yes, very good. So all the create statement, if you want to delete, then you require to use drop. So drop database name is the command to drop any database. Okay. Very good, Mayur. Okay. So this is what the database drop command. See, drop database name. ठीक है. And drop database if exist demo. ठीक है. तो ये क्यों दिया है? If exist हम क्यों लिखते हैं? Because anytime if the database is not there, it will give error. Just like in above statement, drop database demo failed. Database does not exist. Okay, ये आ रहा है आपका, वो ना आए इसलिए आपको क्या देना है? If exist, then only drop. Okay. So always try to remember this whenever you are creating something also, then also you write if exist. Just like here in database also we can use this. हाँ, drop database, create database में भी आप कर सकते हो ये create database create database if exist database name. That way you can do. Okay. Now there are two ways you can create the table in the Hive, internal table and external table. First we will see internal table, how this internal table we can create in the database, and then after we will go for the external. Now there is a difference between the internal and external. As we have already seen that this is the default environment where my all the database will get stored. Okay, so the default path is Hive warehouse, right? This is the location where my all DB files are there, where databases are there. Okay, under this database we require to create a table. ठीक है, इसके अंदर में टेबल बनाना है. ठीक है. Now suppose you want to create internal table. Okay, so internal table बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? So internal table, आप जब भी कोई टेबल बनाते हो तो वो by default internal ही होगा. Internal table means it is the data is there in the default environment only. Okay, but sometimes you require a data where the data is stored somewhere else and not in the default environment. Okay, in that case we require to create external table, so that we will see at the time of creating the external table. But here currently we require to create internal table. So जो भी आप normal command देते हो वैसे ही यहाँ पे table create होगा. But as we have already seen that the HDFS, that is Hadoop file cluster, is always use Hadoop file system which is stored the data in the form of blocks. So data is always there in the file format. Okay, so यहाँ पे जो भी आप डेटा इसके अंदर ऐड करोगे, वो डेटा जो भी ऐड होगा, जो भी लोड होगा, वो अगर कोई एक्सटर्नल फाइल से आप लोड कर रहे हो तो उसका डेलिमिटर क्या होगा, दैट यू रिक्वायर टू गिव. ओके, सो दैट इज व्हाट यू रिक्वायर टू ऐड इन द क्रिएट स्टेटमेंट. ओके, सो हमारा क्रिएट स्टेटमेंट कैसे होगा? नाउ सपोज वी रिक्वायर टू क्रिएट अ एम्प्लॉय table under demo database. Okay, employee table under demo database. Okay, so in that case you require to give all the fields and their data types. We have already seen data type under Hive, and then after you require to give this command: row format delimited fields terminated by comma.
Now in this case what you require to do is, whenever you load any data, at that time, whenever you load any data, at that time the file should be delimited by comma, then only it will load the data in the table. Clear everyone? And anyway, you can also add data using insert statement, but if you want to load data using through some file, then the data must be delimited by comma. क्लियर हुआ सबको? अगर यहाँ पे सेमीकोलन दिया है तो वो फाइल में भी सेमीकोलन होना चाहिए. यहाँ पे अगर आपने जैसे कि यहाँ पे डीईपीटी टेबल है, तो देखो ये कॉमा से डेलिमिटेड से बनी हुई फाइल है, ठीक है, उस हिसाब से आपको फाइल को प्रिपेयर करना होगा. ठीक है, तो क्लियर हुआ सबको ये कि कैसे हमने ये टेबल बनाया है. क्रिएट टेबल डेटाबेस डॉट एम्प्लॉय, बिकॉज ये डेटाबेस है और वो इसके अंदर में ये टेबल बन रहा है, और ये इट इज डेलिमिटेड बाय कॉम. ओके, सो दिस वी आर गिविंग हियर. ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, टेबल बन गया है यहाँ पे. So now if we want to see this table, we require to use what? use demo and then show tables. Okay, तो उसमें सिर्फ एक ही है अभी टेबल है, क्योंकि हमने अभी अभी डेटाबेस क्रिएट किया, तो उसमें ये आएगा ओनली वन टेबल एम्प्लॉय. ओके, तो क्या करना है आपको, पहले आपको यूज करना है directory, which directory you want to use, which directories table you want to see, वो डायरेक्टरी को सिलेक्ट करो पहले और उसके बाद शो टेबल्स. ओके, तो हमारे पास ये टेबल है. नाउ सपोज यू वांट टू सी द टेबल स्ट्रक्चर, देन डिस्क्राइब एम्प्लॉय. ओके, तो ये आपको बता देगा कि क्या क्या डिटेल्स यहाँ पे है. ठीक है, तो हियर वी आर हैविंग द these are the column names and data types we can see. ओके, तो ये आप डिस्क्राइब डेमो से कर सकते हैं. ठीक है, अब टेबल जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो अगेन यू कैन यूज क्रिएट टेबल. इफ नॉट एग्जिस्ट देन टेबल, देन यू विल नॉट गेट एनी एरर इफ टेबल इज नॉट देयर. क्लियर एवरीवन? ठीक है, समझ में आया सबको? तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि कैसे टेबल को क्रिएट करते हैं. ठीक है, नाउ आफ्टर क्रिएटिंग द टेबल वी रिक्वायर टू इंसर्ट data. Okay, insert into table name values column 1 up to column 9. Very good. So that way we can add values in this particular table. तो वो हमको पता था कि इस तरीके से हम कर सकते हैं. Now suppose you are having ready database table data over here, employee underscore data dot txt file, कॉमा डेलिमिटेड फाइल इज हियर, क्योंकि हमने जब टेबल का डेफिनेशन दिया था तो वो कॉमा डेलिमिटेड था. अब ये सारा का सेट, सारा डेटा हमें एट ए टाइम उसमें लोड करना है. ठीक है, तो दैट टाइम वी कैन नॉट यूज इंसर्ट इनटू टेबल वैल्यूज. ओके, सो हम क्या यूज करेंगे अभी कमांड, वी विल यूज कमांड लोड डेटा लोकल. ठीक है, सो लोड डेटा लोकल. ओके, so local, क्यों local कर रहे हैं, because the file is here in HDF, not in HDFS environment but it is in the Linux environment. See home Cloudera, so home Cloudera के अंदर फाइल है, इसके लिए ये क्या कहाँ पे है, home environment of Linux. This is home environment of Linux, तो इसके लिए ये लोकल जगह पे है, इसलिए यहाँ पे लोकल लिखा है. ठीक है, तो load data local in path, you require to give the whole path of the file into table. कहाँ पे लोड करना है, कौन से टेबल में, demo.employee. Demo is the database name and table name. So now we will use this particular command. Okay, so now you can see over here there is no MapReduce job. कोई MapReduce जॉब यहाँ पे भी नहीं हुआ है, बिकॉज वी आर सिंपली कॉपिंग डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट्स इट. तो ये डेटा क्या होगा, जस्ट यहाँ से डेटा नोड में ट्रांसफर हो जाएगा पूरा का पूरा डेटा. ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी आपका MapReduce जॉब जो है वो नहीं एग्जीक्यूट हो रहा है. ठीक है, नाउ सपोज वी वांट टू ऐड मैन्युअली डेटा, मतलब आपको एक वन बाय वन ऐड करना है, लेट्स से. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक डेटा है, उसको हम देखते हैं. ठीक है,
सो यहाँ पे हमने पेस्ट किया, इंसर्ट इनटू टेबल नेम में क्या है, डेटाबेस डॉट टेबल वैल्यूज, एंड देन एज पर द डेटा टाइप, अगर वो स्ट्रिंग है तो कोटेशन में आएगा, अदरवाइज विदाउट कोटेशन. ओके, now here you can see this, the whole MapReduce job is getting executed. Okay, see this. Clear? So now we will see select star from demo dot employee. तो क्या, sorry, employee. So you will get this particular table data also. Jennifer data is there. Okay, so this data is also included in the file. Internal table, Akhilesh, we are currently uh, I'm currently giving demonstration of internal table. Okay, internal table where the data file store in the default environment in Hive metadata. Okay, ओके, सो यहाँ पे डेटा स्टोर हो गया, ठीक है, बट इंसर्ट स्टेटमेंट के टाइम पे मैप रिड्यूस जॉब एग्जीक्यूट होता है, बिकॉज फॉर देर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ इंसर्ट स्टेटमेंट. इंसर्ट वी कैन डू थ्रू सिलेक्ट स्टेटमेंट ऑल्सो. इंसर्ट इनटू सिलेक्ट करके आप कोई और टेबल का डेटा भी यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हो. इंसर्ट ओवरराइड स्टेटमेंट इज ऑल्सो देयर इन द हडूप इन द हाइव. Okay, where you can override the data. So insert statement is having different type of operations. Okay, and that's why as and when you work on insert statement, it will submit a job as a map reduce job. Okay, otherwise simple load command or select star from table, these are the command just dumping the data from one place to another place. There is no intermediate operations going on. Okay, and that's why there is no map reduce job involved in this. Okay, but suppose you want to go for select star, count star, let's say count star from demo employee. So here we will get total number of rows. Okay, count star means total number of records you will get, and here also it will submit a job as a map reduce job because the aggregation part is there in the query. Okay, so here we are not simply copying the data from one place to another place, but we are here some processes going on where we require to aggregate the call rows, number of rows. So some count operation is there. Now suppose you want to see the execution path of any type of statement, then just you require to give explain command, explain keyword before any query. Okay, so now suppose explain count star from demo. So this is the execution path. ओके, सो एग्जीक्यूशन पाथ में क्या आ रहा है, देखो आप रूट से उसने शुरू किया, देन मैप पूरा किया, और रिड्यूसर में उसने काउंट जो है वो एग्रीगेशन किया है यहाँ पे, और उस हिसाब से पूरा का पूरा जो एग्जीक्यूशन है वो एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ. बट सपोज यू वांट टू डू ओनली स्टार, select star from employee, this is not map reduce job. Okay, so see the execution path is different. The path is only fetching the operator, that is nothing but a table scan, that's it. यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरा टेबल स्कैन हो रहा है, वो एलियास का नाम क्या है, टेबल का नाम है एम्प्लॉय, और वन बाय वन वहां से यहाँ पे कॉपी हो रहा है. क्या कॉपी हो रहा है, ये सारे फील्ड. ठीक है, कितने फील्ड है, कॉलम 1 से लेके 8 तक, टोटल 9, 0 to 8. क्लियर हुआ सबको ये? तो इस हिसाब से पूरा एग्जीक्यूशन प्लान बनाता है और उसके बाद एग्जीक्यूट होता है. हमने देखा था कि डायरेक्ट एसाइक्लिक ग्राफ वो क्रिएट करता है, एंड बेस्ड ऑन दैट इट विल एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट बेस्ड ऑन दैट पाथ. ओके, ऑलरेडी क्रिएटेड इन द डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ. सो उस हिसाब से वो पूरा का पूरा काम करता है. ठीक है. So another keyword is external table. Now external table कैसे create होता है, तो सबसे पहले what is the difference between the external and internal? So external table जो है वो कोई भी directory का डेटा होगा, वहाँ उसका डेटा कैप्चर करके उसके बेस पे टेबल बन सकता है. डेटाबेस कैन बी एनीथिंग, बट द टेबल इज क्रिएटेड बेस्ड ऑन एनी outside directory data.
Okay, so now there is only a link between the actual data and the metadata of the hive. जो कॉन्सेप्चुअल टेबल बनाता है वो और जो फिजिकल डेटा है उसके बीच में एक रिलेशन होता है. सो एज एंड व्हेन नाउ सपोज, अच्छा, आई एम आस्किंग यू ओनली, इफ आई give in internal table, currently we have created one table employee. नाउ आई वांट टू गिव ड्रॉप कमांड, ड्रॉप टेबल टेबल नेम. ठीक है, अगर मैंने ये कमांड दिया तो क्या क्या डिलीट होगा? टेल मी. यस, एनीवन? आई एम गिविंग कमांड ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम है डेमो डॉट एम्प्लॉय. अब मैं डिलीट नहीं करूंगी क्योंकि इसके ऊपर मैंने बहुत सारी और क्वेरीज प्रिपेयर की है बताने के लिए. ठीक है, बट सपोज दिस इज द स्टेटमेंट, ड्रॉप टेबल डेमो डॉट एम्प्लॉय. ओके, सो if I fire this query, then तो क्या होगा, मतलब क्या डिलीट होगा इसमें? कोई बता सकता है? एंटायर टेबल डेटा, ओनली डेट टेबल, होल टेबल. ओके, ओके, सो अगर हम इंटरनल, ओके, विल डिलीट द टेबल. टेबल in the sense table definition you are talking about, or table data also you are talking about? Only table data or only table definition, or both, or everything? यस, ओके. तो शेफुल्ला का जैसे कहना है और बाकी बहुत लोगों ने बताया, जैसे निशा बता रही है. ओके, वेरी गुड शुभम. एवरीथिंग विल बी डिलीटेड. ओके, तो यहाँ पे ना तो टेबल डेफिनेशन रहेगी ना उसका डेटा रहेगा, मेटा डेटा से भी वो निकल जाएगा. एवरीथिंग विल बी डिलीटेड at once as and when you give drop command. Okay, so now suppose in in table 10,000 rows are there, so that 10,000 rows are deleted. Okay, so now if we are talking about the table, the table is there with the definition and the data combined, you can say. Okay, but if we are talking about external table, in that case external table means what? The table is table data is somewhere else. Okay, and here you are only creating the table definition, and using table definition you are just creating a link between the definition and the actual data. So as and when you give drop command in external table, what happened? Only definition will get deleted, but data is there as it is. There is no deletion in the data. ओके, सो डेटा फाइल आपकी एज इट इज रहेगी यहाँ पे, बट यहाँ पे डिलीट क्या होगा? आपका टेबल डिलीट होगा. ठीक है, तो अभी हम और डिटेल में देखेंगे एक्सटर्नल इंटरनल दोनों. ठीक है, तो यहाँ पे देखो, क्रिएट एक्सटर्नल टेबल ईएमपी लिस्ट, और फिर वो पूरा टेबल बना है जैसे एज इट इज हमने जो पहले दिया था वैसे ही यहाँ पे देना है. जस्ट यू रिक्वायर टू राइट द एक्सटर्नल कमांड ओवर हियर, दैट्स इट. ओके, तो यहाँ पे टेबल एज इट इज बनेगा, पर यहाँ पर एक्सटर्नल कमांड होगी. अपार्ट फ्रॉम दैट यू रिक्वायर टू गिव द लोकेशन ऑफ द टेबल. ओके, तो लोकेशन कहाँ पे मिलेगा आपको? तो लोकेशन कौन सा है? समथिंग हाइव डायरेक्टरी इज देयर इन द HDFS वेयर माय txt फाइल स्टोर्ड एज अ डेटा. ओके, तो यहाँ पे डायरेक्टरी के अंदर क्या होगा? मेरे डेटा का फाइल. नाउ देयर इज नो लोड स्टेटमेंट रिक्वायर्ड. ओके, अगर आप एक्सटर्नल टेबल क्रिएट करते हो तो आपको लोड स्टेटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज ऑलरेडी इट इज टेकिंग डेटा फ्रॉम द डायरेक्टरी. क्लियर? तो यहाँ पे हमारे पास कमांड है यहाँ पे हाइव डेटाबेस में. तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? यू रिक्वायर टू क्रिएट टेबल डायरेक्टरी इन द डायरेक्ट, एक HDFS में एक डायरेक्टरी क्रिएट करना है. जैसे कि यहाँ पे हमने मेक डायरेक्टरी से टेस्ट dir क्रिएट किया. तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये हाइव से एग्जिट करना होगा. हाइव से एग्जिट करके आपके क्लाउडेरा का CLI आना चाहिए. क्लाउडेरा प्रॉम्प्ट के ऊपर यू रिक्वायर टू क्रिएट अ डायरेक्टरी इन द HDFS. Okay, and then after whatever the file, data file is there, you require to put that data file in the directory. Okay, and then you require to give this command. Clear? And the location is what? Slash test dir. Why only slash test dir? Because it is already there in the working directory. Working directory कौन सा है हमारा? User Cloudera. Clear? Only difference between the external and internal is what? With the external, if you give any drop command, then only definition will be deleted, but data will be there as it is in the Hive directory.
क्लियर? जो भी आपने एक्सटर्नल डायरेक्टरी, जैसे हमने टेस्ट dir बनाया वैसे ही वहां पे डेटा रहेगा, ठीक है? डेटा जो है वो डिलीट नहीं होगा. दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल. Okay, can we use truncate command with external table? हाँ, very good, Shubham. We cannot use truncate command because the data is not there. Okay, only logical connectivity is there with the definition and the data. And whenever you are using all the select statement or query, the data is the system is taking from the data file. But there is no, you can say, full control of table. The Hive is not having full control on the table. Okay, only table definition is there, data is not there. क्लियर एवरीवन? एक्सटर्नल एंड इंटरनल को समझ में आया सबको? ठीक है, तो इस तरीके से आपको डेटा देना है, बट एग्जैक्टली इट विल वर्क सिमिलर. जैसे हमने इंटरनल बनाया वैसे ही वो भी वर्क करेगा, सारे ही क्वेरी उसके ऊपर भी, ठीक है, वर्क करेगी. ठीक है. नाउ सपोज ये ड्रॉप टेबल कमांड है, वो सबको आता है, जो बहुत ही बेसिक है, वो मैं यहाँ पे नहीं ले रही हूँ. ठीक है. डिस्क्राइब, हाँ, आई वांट टू शो यू वन मोर command, that is show table definition. Okay, yes, show create table definition command is also there, जहाँ पे आपको टेबल के बारे में सारी डिटेल्स मिलेगी. जब डिस्क्राइब टेबल करते हैं यू आर गेटिंग ओनली द कॉलम डिटेल्स. ओके, बट यहाँ पे आपको पूरी की पूरी टेबल डेफिनेशन, कैसे टेबल बना है, ठीक है, उसका लोकेशन क्या है, ठीक है, and table properties, everything you will see in show create table demo dot employee command. ओके, तो इसमें आपको सारा का सारा डिटेल जो है वो मिलेगा. ठीक है. ओके, now some queries I am giving you in the chat box. You require to see how we can perform on this query. okay, कहाँ पे है? हाँ, ओके. अच्छा, ये तो होगा नहीं. अच्छा, ओके ओके. सबको क्वेरी दिख रही है? यहाँ पे क्वेरी दिख रही है सबको? यहाँ पे display the full name and salary drawn by an analyst working in department number 20. ओके, और हमारे पास टेबल डेफिनेशन है यहाँ पे. these are the table. टेबल कॉलम, ठीक है. तो ये टेबल कॉलम आ गई सारी, और ये क्वेरी हमको फायर करनी है. कैसे करेंगे, कोई बताएगा यहाँ पे? एनालिस्ट इज द जॉब, और डिपार्टमेंट कोड इज डिपार्टमेंट नंबर 20. salary, already salary field is there. Display the full name. Full name must be the combination of first name and the last name. Using where clause. Okay, so where clause में क्या आएगा? So here we can see the selection and projection, both the operations. Okay, selection and earlier whatever you have done with the DBMS that you require to use as it is, this query will work. Okay, so here you can see this query. Select employee F name. Pipe sign किसके लिए है? It is for concatenation, and then space, one space, then concate with the employee last name. This will give you the full name as employee full name. So here we have converted the column as a employee full name. Okay, what about shorting? Shorting के लिए क्या यूज करेंगे हम? ऑर्डर बाय, एंड जैसे हम ग्रुप बाय यूज करते हैं वैसे ही यहाँ पे हम ग्रुप बाय यूज करेंगे, as we have done with the done with our SQL. The same we will use group by function over here. ठीक है. Thank you everyone.